हेलो 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 हेलो। ऑब्सीडियन। बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है क्योंकि मैं अपने सेटअप पे नहीं हूँ आज भी। यहाँ पे मैं कुछ काम से अपने सेटअप पे नहीं हूँ अभी। दूसरी जगह हूँ तो बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है हवा वगैरह की, क्योंकि पीछे मेरे फैन वगैरह चल रहा है। सो फिर यहाँ पे हमारे आ गए हैं नोट्स, इसमें ऑथेंटिकेशन थॉट्स। तो ऑथ का इतना हमारे कुछ आ चुकी है मशीन मेरी रिव्यू। नाइस। एंड इसको मैं करूँगा क्लोज। यूजर नेम एन्यूमरेशन आ गया हमारे यहाँ पे। स्टेटस कोड, एरर मैसेज, रिस्पॉन्स टाइम। मशीन खुल जानी चाहिए मतलब। लॉग इन कर लेते हैं। ओके, ऑब्वियसली मेरा फाइन नहीं कर पाएगा वॉलपेपर, सिंस वहाँ पे वो है ही नहीं। अगर वॉलपेपर ओपन क्लोज, ओके ठीक है, ये हो गया हमारा। सो सूडो, ये नहीं भूलना था। फिर हाँ वो चलते हैं हमारे। आवाज मेरी हो सकता है बस ठीक आ रही हो। एक बार मैं वो भी देख ही लेता हूँ। एंड यहाँ पे चलते हैं हमारे पोर्टुगल पे। मेरी आवाज नहीं आती है क्या हिस्ट्री में? ओके, यहाँ पे हमारा खोल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चल रहा हूँ मैं अपने ऑल लैब्स पर। ऑल लैब्स स्लैश, ये आ गई हमारी ऑल लैब्स। ऑल टॉपिक्स पे चलते हैं। ये आ गए हमारे सर्वर साइड, जिसमें आ गया ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन वर्नेबिलिटी हमारे यहाँ तक हो गया था। हाउ vulnerability arises,
व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, ये राइट मोड पे करते हैं। हाउ vulnerability arises, तो यहाँ पे हमारा जो है डेफिनेशन पढ़ने में, द इम्पैक्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन vulnerability कैन बी सिवियर। ओके, इम्पैक्ट है ये रहा अरेस्ट का। Most vulnerability in authentication mechanism occur in two ways. The authentication mechanism are weak because they fail to adequately protect against brute force, logic flaw, or poor coding in the implementation allow authentication mechanism to be bypassed entirely by an attacker. This is sometimes called broken authentication. ओके, पहला रीजन है कि जो हमारा ऐप है या वेबसाइट है वो ढंग से ब्रूट फोर्स के आगे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। एंड हमारा सेकंड रीजन हो गया लॉजिक फ्लो, जिससे अटैकर हमारा ऑथेंटिकेशन सीधा बाईपास कर जाता है। देन इम्पैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, हाउ वल्नरेबिलिटी अराइज, एंड लास्टली हम देख लेते हैं इम्पैक्ट्स। The impact of authentication vulnerability can be severe if an attacker bypasses authentication or brute force their way into another user account. They have access to all data and functionality that the compromised account has. If they are able to compromise a high-level privilege account, such as system administrator, they could take full control over the entire application and potentially gain internal infrastructure. Even compromising a low-privilege account might still grant an attacker access to data that they otherwise shouldn't have, such as commercially sensitive business information. Even if the account does not have any sensitive data, it still allow attacker to access additional pages, which provides a further attack surface. Often high severity attacks are not possible from publicly accessible pages, but they are possible from internal page. सबसे पहला पॉइंट आ गया हमारा एक्सेस टू ऑल डेटा, इफ attacker is able to get access to admin account. सेकंड हमारा आ गया further attack surface, and access to sensitive data. यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और इसको करते हैं। ओके, ये आ गया vulnerabilities and authentication mechanism. A vulnerability, a website's authentication system usually consists of several distinct mechanisms where vulnerabilities may occur. Some vulnerabilities are applicable across all these contexts. Others are more specific to the functionality provided. We will look more closely at some of the most common vulnerability in following areas: vulnerability in password-based, vulnerabilities multi-factor authentication, vulnerabilities in other authentication mechanism, vulnerability in password-based login, vulnerability in password-based login. For website that adopt a password-based login process, user either register from an account themselves or they are assigned an account by administrator. This account is associated with a unique username and a secret password, which the user enters in a login form to authenticate themselves.
account given by the admin or we are registering an account is given a secret password. In this scenario, the fact that they know the secret password is taken as sufficient proof of user's identity. Knowing the secret password is taken as proof of user ident identity. इसको कॉपी करो हटाओ बैक जाओ या फिर इसको भी हटाओ टैप. This means that the security of the website is compromised if an attacker is able to either obtain or guess the login credentials of another user. This can be achieved in a number of ways. The following section shows an attacker can use brute force attack and some of the flaws in brute force protection. You will also learn about the vulnerabilities in HTTP basic authentication. Brute force attacks. A brute force attack is when an attacker uses a system of trial and error to guess valid user credentials. These attacks are typically automated using word lists of username and password. Automating this process, especially using delegated tools, potentially enable an attacker to make vast number of login attempts at high speed. Brute forcing is not always just a case of making complete random guesses at username and password. By also using basic login or publicly available knowledge, attacker can fine-tune brute force attacks to make much more educated guesses. This considerably increases the efficiency of such attacks. Websites that rely on password logging as their sole method of authenticating user can be highly vulnerable if they do not implement sufficient brute force protection. Brute forcing usernames. Usernames are especially easy to guess if they conform to be recognizable patterns such as email address. For example, it is very common to see business login form in this format. First name, last name, some company name. However, even if there is no obvious pattern, sometimes even high privileged accounts are created using predictable usernames such as admin and administrator. Rahel, another space that can be in easily easy, easily guessable format such as and predictable. We are predictable, predictable, the capital user such as admin, admin, administrator,
or system and more. During auditing, check whether the website discloses potential username publicly. Check. For example, you are able to access user profile without logging in, even if the actual content of profile is hidden. The name used in profile is sometimes the same as login username. You should also check HTTP responses to see if any email address are disclosed. Occasionally, responses contain email addresses of highly privileged user, such as admin or IT support, brute forcing passwords. Passwords can similarly be brute forced, with the difficulty varying based on the strength of the password. Varies on the power, vary on strength of the pass. Many websites adopt some form of password policy, which forces user to create a highly encrypted password that are theoretically at least harder to crack using brute force alone. This typically involves password with a maximum number of character, lower and uppercase, and one special character. Some websites has password policies which require certain things while making a password. However, while highly interpret passwords are difficult for computers alone to crack, we can use basic knowledge of human behavior to exploit the vulnerability that users unwittingly introduce to the system. Rather than creating a strong password with random combination of character, user often take a password that they can remember and try to cobalt it into fitting the password policy. For example, if my password is not allowed, user may try something like password 1 or password with symbols instead. In case where the password policy requires user to change their password on regular basis, it is also common users to just make minor predictable changes to their preferred password. For example, password 1 hashtag or password 1 question mark. The knowledge of most likely credential and predictable pattern means that the brute force attack can often be much more sophisticated and therefore effectively than simply littering through every possible combination. यूजरनेम एन्यूमरेशन हो गया था आई थिंक और यूजर एन्यूमरेशन हो चुका है फर्स्ट और via रिस्पॉन्स टाइमिंग देख लेते हैं पर if most of the requests were handled with similar response time, any that deviates from this suggests something different was happening behind the scene. This is another indication that the guest username might be correct. For example, a website only checks whether the password is correct for the username if the username is valid. This extra step might cause a slight increase in the response time. This may be subtle, but an attacker can make this delay more obvious by entering excessive long password. That website take noticeably longer to handle. This may take, but an attacker can make this delay more obvious by entering
To add to the challenge, the lab also implement promo, which can be easily bypassed by manipulating. How to change, manipulate HTTP header to bypass IP based protection. Okay, X forward header. X forward for client proxy 123. Attacker can take advantage of this and test restriction rule by spoofing a different IP that they know is allowed by the application. Okay, यहाँ पे एक काम करते हैं, एक यहाँ फोल्डर बनाते हैं लिनक्स लैब्स एंड एक नई फाइल बनाते हैं लैब, जिसको डालेंगे लैब के अंदर, वनरेबिलिटी को डालेंगे ऑथेंटिकेशन के अंदर। व्हाट्स योर नेम पर रख देते हैं यूनाइटेड डिलीट, डिलीट वेलकम डिलीट, डिलीट। ओके, लैब डिस्क्रिप्शन हो गई हमारी यहाँ पे। और लैब एक्सेस कर लेते हैं हमारी। तो सबसे पहले बेसिक चीजें कर लेते हैं, उसके बाद अटैक प्लान करेंगे। सबसे पहले तो मैं वर्क स्वीट बोल लेता हूँ, sudo java नेक्स्ट स्टार्ट, इसको करते हैं क्लोज। जब तक ये हो रहा है हो गया, इसको चलते हैं यहाँ पे ओके, यहाँ चलते हैं एंड माय अकाउंट पे चलते हैं। बैक विनियर एंड पीटर, विनियर पीटर। ओके, सबसे पहले तो ये कैप्चर करना पड़ेगा हमें, वर्क स्वीट लॉगिन एंड इसको कर देते हैं बंद। लॉगिन आईडी विनियर सेंड दिस टू रिपीटर, एक्चुअली रिपीटर नहीं जाएगा हमारे इंक्लूडर में। एंड कंट्रोल एच, एफ का क्या, कंट्रोल एच टुडे
ये रहा आईपी रिस्ट्रिक्शन का। क्या बुरा है? मीडियम। इसको करते हैं बंद। यहाँ पे आते हैं। मेरा वर्क स्वीट बंद हो गया था। बंद है, नाइस। एंड यहाँ पे नीचे चलते हैं। It relies on having proxy between the client and the server for forwarding the request. This proxy forwards the client IP to the server if allowed, or whitelisted the server will respond with the requested page. Otherwise, it will block the request. The proxy does that by adding a X forward or header that contains the client IP to the request before forwarding, before sending it to application. Then application checks export or header to determine whether IP address of client is allowed. Match and replace rule. Navigate to the proxy tab and check option match and replace. Click add. Specify the detail needed for matched rule. We start with the specifying type of our rule. In our case, it's request header since we want to insert the modified header in all client request. Okay. Bypass web extension can be installed to configure to send automatically each time you navigate to the application. Go to extender tab, install extension, edit to your code tab. We need to assign session handling request to make perform required action when making HTTP project option session rules invoke from extension. How to bypass IP restriction using burp intruder. Spoofing your IP using burp proxy allow you to configure match and replace rule that automatically modifies your request and response while you explore the target application at normal burp browser. This enables you to add, remove, modify header in request or response. For example, there are a number of uses for this, including spoofing your IP address. In some case, this may allow you to trick a server into believing that you belong to its local network, which could enable you to communicate with internal infrastructure that is otherwise inaccessible. Open the lab. For simplicity, let's assume that your 20 identified the server is using a custom HTTP header. Click add X. ओके, लेट्स सी अगर मैं इसको करूँ यहाँ पे रिपीटर पे जाके सेंड एक्सप्लेन कंटेंट एडमिन पैनल हाउ टू यूज block मैश रिप्लेस रूल open work and attempt to access admin panel. Try to access admin. Know that you are prevented from doing so. For simplicity, let's assume that you have currently identified the server is using a custom HTTP header. So
So bypassing IP restriction with Bob Swede. Okay, that X forwarded for, ये तो वही सेम है हमारा. और match good first we need to specify the type of rule. In our case it's request header, since we want Verb Suite to insert the modified header into all client request. Next in match field leave it blank. Images नहीं आ रही हैं. पहले वाले भी चलते हैं. ये रहा मीडिया. X forwarded for, इसको करते हैं बैक proxy. ये रहा ID विनियर. Option okay proxy. Match and replace. Click add rules. Match and replace rules. Add request header. Match. Specify the details needed for match rule. We start with the specifying the type of the rule. In our case, it's request header since we want to insert modify. Next, in the match field, leave it blank. To match all requests, in replace field, we will enter X forwarded for header. Match replace X forwarded for. Let me see X forwarded for. With the IP address we want to send request from. Adding a comment is optional, but is useful if you are using multiple root at the same time. Let's see. मैं अपनी आईडी दे देता हूँ. I have one fit. या फिर लोकल देता हूँ कि कॉपी पेस्ट X forwarded for. And एक मिनट. Okay, I am back. So let's see. अपना हो गया ये. इसको करते हैं ओके. what the fuck. हाँ ये रहा. ओके आ गया.
एंड नाउ HTTP पे चलते हैं। दोबारा इंटरसेप्ट करें, इसको इंटरसेप्ट में करता हूँ, या फिर एक काम करो, बैक माई अकाउंट, अपडेट रोबो माई अकाउंट, विनिया पीटर proxy on verb suite, intercept on login, not now, ये आ गया होस्ट, मेरा एक्स फॉरवर्डेड फॉर भी आ गया हमारा। इसको सेंड करते हैं इंक्लूडर में, और अब proxy का नंबर। सबसे पहले यूजर नेम पे करते हैं ऐड, एंड यहाँ पे चलते हैं बैक फॉर यूजर नेम, क्रेडेंशियल यूजर नेम्स। कॉपी करता हूँ इनको एंड पेस्ट। नाइस। एक बार इसको स्टार्ट करके देखते हैं। सेटिंग्स, ग्रैप, ओके यहाँ से ग्रैप का नहीं है तो इस सेटिंग्स में मिलेगा, इस सेटिंग्स में होगा ग्रैप 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 ग्रैप। ये रहा ग्रैप। ओके हमारा ले रिस्पॉन्स रिसीव 162 एंड रिस्पॉन्स। ओके प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर 30 मिनट्स, एरर आ गया हमारा, यानी वो बाईपास नहीं हुआ। इस पे चलते हैं बैक, सोल्यूशन देखते हैं कैसे हुआ। एक्स फॉरवर्डेड फॉर ही आना था हमारे यहाँ पे। सबमिट एन इनवैलिड यूजर नेम दैट सेंड फॉर post login request to both repeater, experiment with different username and password, notice that your IP will be blocked. Identify the X forward for header is supported, which allows to spoof your IP address and bypassing IP brute force protection. Continue experiment with username and password. Pay particular attention to the response time. Notice that when username is invalid, the response time is roughly the same. However, when you enter a valid username, the response time is increased depending on the password you enter. Send this to Burp Intruder, select Pitchfork Attack, and add X forwarded for header, add payload option for add payload option for X forwarded for header with username parameter. या फिर इसको हटाओ, दूसरी लैब करते हैं। ब्रोकन बूट फोर्स प्रोटेक्शन IP ब्लॉक, या फिर इसी को ही करते हैं, पर देखना पड़ेगा कि उसकी उस पे हमारा क्या आएगा। कम्युनिटी सॉल्यूशंस पे देख लेते हैं। स्पीकर में लगा लेता हूँ अपनी, स्पीकर लग चुके हैं। Hi everyone, welcome back to another video in the Web Security Academy series. In today's video, we'll be covering lab number 5 in the Authentication module titled Username and then brute force the user's password and access the user's account. Okay, let's
response lengths and there was no difference. So the next thing to look at is see if there's a difference in timing between an invalid username and a valid username. So let's hit send over here. You could see it took 330 ये आवाज कितनी कट रही है इसके अंदर 363 seconds. And if we run कम्युनिटी सोल्यूशन को इतना सीन तो सुनाई जा रहा है Close. Hi guys, we will solve the lab username enumeration via response timing. The level of this lab is practitioner and the goal is to enumerate a valid username, brute force this user's password and access their account page. We leave the message invalid username. If you try an invalid username and password too many times, your IP will be blocked. To circumvent this, you can use X sends request and now change the number to 500 request 503 sends request and now you can try so many times, but you have to change the value of the X forwarded header. Okay, now replace the default the invalid username with our default user request. You see we received an HTTP 302. Change the password to a bit longer, Peter. Change the X forward header to 505. Send the request. Password. See, it's invalid username or password. Copy the whole password. Copy the password and add it at the end of the password and change the number to 506. Send the request and you see the response takes longer. Now delete the password to the real password Peter, sends request and you see the response is a bit faster. Okay, now send this request to verb intruder and switch to verb intruder. Add. Very long password, maybe 100 Peter. Now switch to the payload tabs, as to the payload tab, payload set 1. Change this payload type to number. Here 1, 2, and here in the that will spoof our IP address. Now go back to the payload sets section and choose the second payload type. Of course, you have to change the attack type to pitchfork. Now you can choose the second payload and here you put in the usernames. Click and step 1. So, of course, start the attack.
and click the response received and also the response completed. So the response Okay, columns. response time of Arizona means that our username could be Arizona. Lead to the Positions tab, click the Clear button and set a mark to the value of the X forwarded for header. Put in the username to the and copy. Switch back to your burp intruder and leave the first payload set at 1 and numbers. Clear button in the payload options section. Okay, let's try. So सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं जिसमें हमारा आएगा 500 then स्नाइपर की जगह हमारा फिश होल एंड कॉफी let's go to 1 layer auth change simple list to numbers from 1 to 100 step 1 and linear and go to paste एक बार देखते हैं कि ब्लॉक होती है क्योंकि response received response ID block हो गई था आईपी को ब्लॉक नहीं क्या चेक करना चाहिए एक सेकंड टाइम क्या देखेंगे and copy this one in the tag. Start the attack. If the attack
and click the response received. Okay. Okay, response received. Okay. Response received. Request. Response time of Arizona means that our username could be Arizona. Okay, है इसके तरीके से फिर अच्छा के फिर एरिज़ोना रिस्पॉन्स इसको भी सेव लेना क्या होता है एक काम करते हैं इसमें कॉपी करते हैं और दोबारा अटैक करते हैं स्टार्ट स्टार्ट मेरा भी सेव नहीं आया स्टार्ट Okay. Web intruder. Open the positions tab and click the clear button. Set a mark. Add. export word 0 To export word 0 the username. Add. मैंने ऐड कर लिया है Put in a very long password, maybe 100 or more signs. Copy. More than 100 characters. Okay. To the payload tab. Payload set 1. Simple list. That's the value of the X forwarded 4 header. Change this payload type to number. ये नंबर का सिलेक्ट कर दिया Numbers here. from 1 to 100 कर दिया था कर दिया हाँ कर दिया Max fraction digits. Set a 0. That will spoof our
max fraction digit, IP address. Now max fraction digit to 0. go back to the payload sets section and choose the second payload type. Of course, you have to change the second payload username site section. पेस्ट कर दिया है. Step 1. So, सबको कर रखा है बिल्कुल यहाँ पर. और स्टार्ट करते हैं. एक बार चेक करते हैं कितना है. Administrator transfer x converted for 0. Discard. String. Access the map. My account. Global. Yeah. Data. Repeater and intruder. इसको कॉपी करो and X forwarded for as 0. It's which for attempt add simple list numbers in from 0 to 100. Step 1. From 0 to 100 हो गया. Then यहाँ पे इसको 200 कर देंगे and 1 and then have correctly we have to add
just like that to correct me. So that it be fed out and have the Bharat Bank paste and then that ओके हो गया हमारा स्टार्ट करते हैं चार then returns then मेरा रिस्पॉन्स रिसीव वो देखिए यश कैसे आ रहा है देखिए यश कैसे आ रहा है मैं देखना चाहता हूँ मैं इस यश को लेके चलूंगा इसके अंदर डिफरेंस एंड इसको बंद करते हैं स्टार्ट करते हैं रिस्पॉन्स रिसीव जो भी इस तरीके से है ओके दूसरा गेट रिक्वेस्ट मैं 2 मिनट बाद ओके आई एम बैक तो यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पे विनिंग है तो हमारा एफ आएगा यहाँ पे एंड पेज 4 की जगह स्नाइपर क्लियर कर देते हैं इसको करते हैं ऐड नंबर्स की जगह सिंपल लिस्ट कैंडिडेट पासवर्ड्स कॉपी पेस्ट स्टार्ट 200 ओके
एक्स हेडर इसमें मैंने गलती से नहीं चलाया। डिस्कार्ड ओके, एक्स हेडर भी चलाना पड़ेगा। तो आए तो टाइप तुम्हारा पेज 4 भी रहेगा। इसको भी ऐड कर लेते हैं। पीटर वाले पे कर दिया पेस्ट। पहले वाले पे हफ्ते इसको क्लियर। पहले वाला हमारा नंबर 1 to 200। अब स्टार्ट करके देखते हैं। इनवैलिड। नेक्स्ट। इनवैलिड। डिस्कार्ड। ऐसे तो सॉल्व नहीं हो गई। ए एफ को लगाते हैं दोबारा ऐड पर। ऐड पे पेलोड नंबर स्पीकर सेकेंड ए एफ क्लियर पेस्ट स्टार्ट। मेरे को कॉलम तो नहीं दिख रहा है तो क्लियर। इसको बड़ा कर लेते हैं। फिर ए एफ कैसे आ रहा है, फिर ए एस कैसे आ रहा है। एक बार फिर इसको बहुत बड़ा कर देंगे। ओके स्टार्ट। स्टार्ट।
दोबारा इसको still here. That is from this week, 6. Still here. 480 वाले पे कौन है एडमिनिस्ट्रेटर and I give up. I give up. I give up on this one. यहाँ पे कुछ भी करना पड़ेगा इस लैप को हटा टाइमर छोड़ फ्लोट फोर्स प्रोटेक्शन HTTP basic authentication ओके सो करते हैं अपन यस एंड आज के लिए इतना ही अभी मैं कुछ टाइम बाद दोबारा शायद लाइव स्ट्रीम करूंगा तब करूंगा बाकी